Yes, good evening, one and all. Wishing you again a very happy 2021. As we all are gathered here to celebrate few activities, to perform few activities by secondary students. Before going for it, I would like to speak few words on Harita Haram. Harita Haram literally means garland of greenery. It was launched by our Chief Minister K. Chandrasekhar Rao on July 3rd, 2015. It was started to protect our state from all the unnecessary damages. So it is our foremost duty to plant the trees. I want to wind up my small speech with the slogan that is plant a tree and save a life. Okay. So I hope all the participants are here. I would like to check them again once more. I'm taking your attendance, bacho. Those who had given their names. Class 7th, Abdul Samad is here. Class 7th, Abdul Samad. When teacher is talking about attendance, please make sure that government has made it compulsory. Your online attendance, 80% attendance is must. I am unable to see Abdul Samad here. I am reading out the participant names. Class 8, Hasifa. Present, ma'am. Are you here? Hasifa, are you here? Yes, ma'am. Okay. Thank you. Now, Husna, class 8. Present, ma'am. Sorry. Class 8, Juveria. Present, ma'am. Class 7th, Hafsa. Present, ma'am. Mujtaba of class 8. Mustafa. Present, ma'am. Okay. Class 9th, Safi. English quiz participant. Class 9th, Safi. Unable to find his name in the list. Going towards class 10th, Abdul Malik. Abdul Malik of class 10th. Not finding him. Khatija, class 10th, Khatija. The students are mute. You can raise your hands so that the teacher will know that yes, you are present. Khatija, unable to find her name, ma'am. Munazza of class 10th. Yes, she is here, Munazza. So here I am finding 7 participants. So all the very best, bacho. Are you ready to start your quiz? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The first round is compulsory round. To whom I am asking, she or he should answer the question. Okay. Now I would like to ask Husna, class 8, Husna. Yes, teacher. Who was the last messenger of nation Bani Israel? Isa alayhi salam. Mashallah, good. Hasifa, class 8, Hasifa. On which place Isa alayhi salam will be sent down again? 45, ma'am. 47 years ago. 47 years.
The correct answer is Hasifa. Isa alayhi salam will be sent down again on the Tower of the Mosque at Damascus. And Okay, it's okay, beta. This is the part of the competition. Okay, no need to worry. Now, Hafsa, class 7th. Yes. Who used to blow in the birds made up of clay to make them alive? Isa alayhi salam used to blow. Mashallah, good. Now, Mujtaba of class 8. Who will be arriving in world near the doomsday? Mujtaba of class 8. Isa alayhi salam, ma'am. Okay, mashallah, good. Juwairiya, in which phrase of the Holy Quran Allah subhanahu wa ta'ala has described about Isa alayhi salam? Allah subhanahu wa ta'ala has described about the chapter Nisa, verse and many other verses of Holy Quran. Can you say the verse number again, beta? What is the verse number? Verse number 158. Okay. And chapter? Chapter Nisa. Very good. Excellent. My next question is to Munazza. Is Zakaria alayhi salam also is the messenger of Allah? Munazza. Munazza Fatima of class 10th. Unmute yourself, Munazza. Everybody, please keep your cameras on during this competition. Munazza, please answer this question. Is Zakaria alayhi salam also is the messenger of Allah? yes. Please switch on your cameras, all of you. Now, my next question is to Mustafa of class 8. What is the secrecy and hidden purpose of the arrival of Isa alayhi salam in this world? Mustafa of class 8, what is the secrecy and hidden purpose of the arrival of Isa alayhi salam in this world? Ma'am, Allah knows better. Okay. Now, I am going to start second round. Whoever is raising the hand first, he or she is getting the opportunity to answer. Okay, bacho? So please one second, Sami teacher, you make it clear. They had to raise the hands here Yes. from the participants, not in the camera. So we'll see your raised hands in the list of participants, and whoever is doing first will get an opportunity. Okay? Yes. Do you all? Can See, you all see? Where is it? Light on. Now I am seeing the participants list. Okay. Whoever raised the hand first, she or he will get the opportunity to answer the question. Do they know? Okay, bacho? Where are the hand raising option? Can you see the hand raising options in this on the? Do you all know that where it is? Yes, ma'am. You all know it. Good. Yes. Good. All knows, na? So shall I start? Okay. Come on. Now, which religion is acceptable in front of Allah? Juwairiya. Islam Take is out the first. acceptable in front Yes, of beta? Allah subhanahu wa ta'ala.
Islam is acceptable. MashaAllah, good. Now, all of you lower down your hands, please. Good. Now, please be ready to answer second question. From when the preaching of Christianity started in India? Again, Juveria. Between 16th and 17th century, preaching of Christianity started in India, organized in 1857. Yes, very correct. MashaAllah, good. Now, third question of this round, last question. What we Muslims believe about Isa alayhi salam? Hasifa. I can see the hand of Hasifa. We Yes, Muslims Hasifa. believe about Isa alayhi salam is alive in heaven, and he will arrive in this world before the judgment day. We get proof from the Holy Quran. Yes, very correct, Hasifa. Good. MashaAllah, you all are prepared well and answering well. Now, the third round, which I would like to, where I would like to post the question in the chat box of Zoom. Okay? There you have to write it. Okay? Okay. Just give me small answer, meaningful answer over there. Okay? I am going to post only 3 questions. So all of you please open the chat box. Open your chat box. Sami teacher, unmute yourself. Third round will be on Zoom chat box, bachcho. Okay? You have to select the option send to everyone from there. Zoom chat box पे जो हमको chat box मिलता है वहां पर send to everyone option पर जाइए आप. I will be posting 3 questions one by one. Whoever write the answer first, I am going to accept their answer. Okay? Okay? Do you know how to write in chat box as we used to write in our daily classes, na routine classes? I hope you knows well. Please unmute yourself and answer me that I can start. Type yes in the chat box that you all can do it. Type yes in the chat box. So let us see how many of you can do understand it. Yes. Are you all? Yes, I received answer first from Khatija. Yes. So in this way, okay, bachcho? Now please be ready to receive the question on chat box. Here is your question. And the correct answer is from Juveria Sadat, Maryam alayhis salam. The very first answer is from, the correct very first answer is from Juveria Sadat, Maryam alayhis salam. No, I think Husna gave the answer first. Check it again, ma. No, ma'am, Hafsa gave, but she wrote Maria. Whereas Husna, the name is Maryam alayhis salam. Husna also wrote as Mariam, she wrote. Okay, okay. Maryam, only Juveria wrote correct. Right, right. Now please be ready for next question.
Yes, please answer the question. I want correct answer, beta. Complete answer. Still waiting to receive it. Few errors are there. Yes, again, the correct answer is from Juwairiya again. Hazrat Imran. Hazrat Imran alayhi salam from Juwairiya again. With all correct spelling. Yes. Ma'am, the answer was wrong, ma'am. Alayhi salam was not there, ma'am. आबिद, ये नहीं समझ में आ रहा, फिर से बताओ इसको। हजरत इमरान भी लिखा है उन्होंने उससे पहले। नहीं समझ में आ रहा। हजरत इमरान भी लिखा है, प्लीज चेक। ये दो लोग। हाँ, वो टच स्क्रीन की आदत है ना मुझे, ये नहीं हो रहा। प्लीज बी रेडी फॉर नेक्स्ट। नहीं हो रहा, क्या करूं? आ रही आवाज? उससे आ रही थी आवाज। आ रही? नहीं। हाँ? नहीं। ऊपर नीचे रेड ऊपर। Don't worry, students. The chat will be saved, and we will recheck again before we declare your results. So don't worry about your results. Keep answering quickly. Please be ready to receive next last question of the quiz. मैं पहले चेक कर लूं आवाज जा रही है मेरी कि नहीं जा रही है? Yes, Rumana teacher, we can hear you. अच्छा, थैंक यू मैम। एक्चुअली मेरे टैबलेट खराब हो गया, वो काम नहीं कर रहा है। मैं लैपटॉप पे आई हूँ, मुझे सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। वो टच स्क्रीन की आदत है मुझे। You can, but we are able to hear you. ओके, थैंक यू। अगर कोई मिस्टेक होना तो आप समझ जाइए, अभी मैं आज लैपटॉप पर हूँ, मुझे थोड़ा हैंडल करना अभी नहीं आ रहा है, अभी मैं पूछ के कर रही हूँ। ओके मैम। Yes, students, please be ready to receive your last question of the quiz. Romana, we are recording this program, please. Sorry, a spelling error gone over there. फर्स्ट टाइम है, मैं अभी चेक करती हूँ कैसे करना है रिकॉर्डिंग। बताइए मैम कैसे करना है। अभी मेरा आना। I am recording, Romana teacher. Don't worry. मैं कर रही हूँ आपकी recording. Again, got the correct answer from Juwairiya. While talking to Romana teacher, there is a spelling error from my side. Sorry for it. Actually, that is Isa. Over, ma'am. Now the result is with me. Good. We don't announce the result because we are going to recheck it again in the chat. I'm saving the whole chat box. Okay. Okay, ma'am. Right. Okay. Yeah. Next program, please. यस मैम, मेरा है शायद नेक्स्ट। तो मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ अपने स्टूडेंट्स की कि है ये नहीं है प्रेजेंट। सुमैया प्रेजेंट टीचर। महक प्रेजेंट टीचर। अब्दुल मलिक क्लास 10th। अब्दुल मलिक, मैं कॉल कर लेती हूँ। रिदा प्रेजेंट टीचर। आयशा प्रेजेंट टीचर। नादिया प्रेजेंट टीचर। ठीक है, 2 ग्रुप में रखा है मैम इस क्विज को। क्लास 10th ग्रुप सुमैया, महक और अब्दुल रहमान, और सेकंड ग्रुप में है क्लास 8th, 9th और 7th के स्टूडेंट्स एक साइड में। तो ग्रुप वाइज है, क्योंकि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी तो स्टूडेंट्स आंसर करते थे तो क्लियर आवाज नहीं आती थी, इसलिए
मैंने ग्रुप वाइज कर दिया है। तो एक ग्रुप में जो आते हैं, ग्रुप ए में सुमैया, अब्दुल रहमान और महक आएंगे। ग्रुप बी में नादिया, रिदा और आयशा है, क्लास 9th की आयशा फातिमा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसे भी ग्रुप्स बनाए हैं प्लीज प्रोसीड विद द। हाँ ओके, अभी अब्दुल रहमान नहीं आए मैम, उनको मैं एक कॉल कर लेती हूँ। 1 मिनट दीजिए मैम। ओके ओके, अब्दुल रहमान ग्रुप ए में है आप, महक और सुमैया, ठीक है। Tell me the names of the students who are in group A, जिसका आप क्विज कंडक्ट करने वाले हैं, तो so that I can bring them on the pin screen mode। कौन कौन है वो बताइए आप। सुमैया, हैंड्स प्लीज। सुमैया, महक और अब्दुल रहमान ग्रुप ए में है। अब्दुल रहमान साकिब। जी, अब्दुल रहमान साकिब। ओके, एंड Abdul Rahman Saqib, Sumaya, 1 second, let me get them on the pin, okay? And who is the next? Mahek. Mahek is also in the group. Okay. हाँ, और ग्रुप बी में है, ग्रुप बी में है। ग्रुप ए रहने का आप पहले कंडक्ट करने वाली है, बी का? जी नहीं, ग्रुप ए का आंसर देंगे फिर ग्रुप बी। अगर ग्रुप ए आंसर नहीं करते तो ग्रुप बी फौरन आंसर करेगा। अपने माइक ऑन रखिए, क्योंकि पॉइंट उनकी तरफ चला जाएगा, वो पॉइंट जो वो आंसर नहीं करेंगे। all right, there is no need for a pin, then we had to keep all on, right teacher। और अपने नंबर्स जो है याद रखिएगा कि आपको कितने पॉइंट्स मिले। मैं आपको हाथ के हाथ बताती जाऊंगी, एक ग्रुप में और एक ग्रुप ए और ग्रुप बी का, ठीक है। ओके, स्लेब का खात्मा कौन करेंगे? ग्रुप ए, ईसा अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, शाबाश। क़यामत के करीब कौन तशरीफ लाएंगे दुनिया में? ग्रुप बी, ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कितने साल रहेंगे? ग्रुप ए 45 साल। 45 साल, गुड। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मरने के बाद कहाँ दफन किया जाएगा उनको? ग्रुप बी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मरने के बाद मदीने में कुर्बे रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दफन किए जाएंगे। शाबाश, रोज़े मुबारक में के करीब उनको दफन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर ग्रुप ए, बेमौसम फल का जिक्र किस सूरे में आया है? सूरह आल इमरान। सूरह आल इमरान 20। सूरे बताइए, वो आयत बताइए। 37, आयत नंबर 37। हजरत ईसा, ग्रुप बी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किस सूरे में है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरह निसा, आयत नंबर 158। जी 158, सही है। ग्रुप ए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में दोबारा नुज़ूल का राज और हिकमत क्या है? राज़े हिकमत अल्लाह बेहतर जानते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ग्रुप बी, अकीदा तस्लीस किसको कहा जाता है? अकीदा तस्लीस अकानिम से मुरक्कब है। पहला बाप, दूसरा बेटा, तीसरा रूहुल कुद्दूस। इन तीन मजमुए के नाम को, इन तीनों के मजमुए को तस्लीस कहते हैं। शाबाश आयशा।
अहले इस्लाम का क्या अकीदा है तमाम इस्लामी किताबें और इंजील के बारे में? ग्रुप ए, अहले इस्लाम का ये अकीदा है कि कुरान के बाद सारी इस्लामी किताबें और इंजील मंसूख हो चुकी हैं। हाँ, करेक्ट करो सुमैया आंसर को। अब्दुल रहमान आप। कुरान से पहले मुसलमानों का अकीदा यह है कि कुरान से पहले तमाम आसमानी किताबें इंजील मंसूख हो चुकी हैं। हाँ, मंसूख हो चुकी कायमे कुरान मजीद में, यानी कि उन सब को कायमे उनका जिक्र आ चुका है कुरान मजीद में। उन सब के जितने बयानात थे वो सब कायमे आ गए हैं कुरान शरीफ में, उनको एक साथ जमा कर दिया गया है। ग्रुप बी, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा मजहब कौन सा है? अल्लाह ताला के इस्लाम। जी, सबसे ज्यादा पसंदीदा मजहब जो है वो इस्लाम है। ग्रुप ए, हिंदुस्तान में ईसाईयत की तबलीग कब से हुई? 16वीं और 17वीं सदी में हुई, लेकिन शाबाश महक। 1835 में मुंतजम अंदाज में शुरू हुई। 1857, ठीक है जी, सही। कुरान मजीद में, ग्रुप बी, कुरान मजीद में कितने अंबिया का जिक्र आया है? 26 अंबिया का जिक्र आया है, माशाल्लाह। मिट्टी से परिंदों को बनाकर कौन फूंक मारते थे? ग्रुप ए, ईसा अलैहिस्सलाम। शाबाश। कब्र में रखे मुर्दों को जिंदा करते थे कौन? ग्रुप बी, ईसा अलैहिस्सलाम उनसे जिंदा करते थे। देखिए, मैं जब तक आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जब तक एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होता है। जहां मिस हो जाएगा वहीं स्टॉप कर दूंगी। समझ में आई आपके बात? जहां पे भी जो भी ग्रुप नहीं देगा वो विनर हो जाएगा, सेकंड वाला। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर करना है, ग्रुप ए और ग्रुप बी को। मुझे नहीं लगता न्यूरोजरी के बच्चे हार मानेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बताइए। ग्रुप ए, गुड। ग्रुप बी, अल्लाह ताला ने किसके लिए बेमौसम फल उतारे थे? ग्रुप बी, मरियम। टीचर पहले ग्रुप बोलिए, बाद में क्वेश्चन। ओके, ठीक है विद्या टीचर। अब जरा मुश्किल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जरा ध्यान से। अभी बहुत इजी पूछ लिए, ठीक है? लेकिन फास्ट ग्रुप बी दे रहा। फास्ट दे रहे हैं? अच्छा नहीं है। अच्छा ठीक है। ग्रुप ए, इस्लाम का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अजीमुल शान कारनामा कौन सा है? दज्जाल का खात्मा, उसका खतरा है। वेरी गुड, शाबाश। ग्रुप बी, दज्जाल किस में से होगा और उसकी निशानी क्या होगी? दज्जाल यहूदियों में से होगा। और उसकी निशानी एक होगी, उसके माथे पर काफिर लिखे हुआ होगा। माशाल्लाह, वेरी गुड। हदीस नज़ूल मसीह के मकासिद में अहम मकसद क्या है? ग्रुप ए, ग्रुप ए, टाइम अप हो रहा है। ग्रुप ए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इंसानों की रूह तो अंजाम। नो नहीं, अभी आंसर सही नहीं आया है। हाँ, विद्या टीचर काउंट करना शुरू करिए। विद्या टीचर 2 3 हाँ, बोलिए बोलिए ना। ऊपर आंसर मुझे दे दीजिए ना आप, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। बोलिए फिर से, लाउडली बोलिए। फिर हो गया टीचर, टाइम खत्म हो गया। ग्रुप बी,
यस ग्रुप बी आप बोलिए। ग्रुप बी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूए जमीन पर इंसानों की हाँ बोलो आयशा। इंसानों की जमीन पर इंसानों की हाँ वन रश्दो हिदायत। शाबाश नादिया। आगे पूरा आंसर कंप्लीट कीजिए। अंजाम देंगे। शाबाश। ग्रुप बी 1 पॉइंट आगे हो गए। तो विनर कौन है? ग्रुप बी। सॉरी मैंने पहले कहा था कि जब भी आपका 1 पॉइंट आगे हो जाएगा वहीं पे स्टॉप कर दूंगी मैं इस कंपटीशन को। ग्रुप बी विनर है। टीचर ग्रुप बी फास्ट आंसर दे भी रहे थे। ऐसे ग्रुप बी वाले आंसर लोग बहुत फास्ट आंसर दे रहे थे। फट जैसे ही क्वेश्चन आंसर जल्दी आ रहा था। क्या उनके क्या नाम बोल? बताइए टीचर। हाँ अच्छा नाम बता दे। ग्रुप बी में है आयशा, फातिमा, रिदा और नादिया। 7th क्लास नादिया। अच्छा आयशा सदफ खान। आयशा सदफ खान। यस। नहीं आयशा और रिदा ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी की थी। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छे बोले दोनों ने। यहाँ पर जूनियर्स ने सीनियर्स को डिफीट कर दिया। मैंने ग्रुप वही बनाया था कि बट आप लोगों ने सबने पार्टिसिपेट किया। दैट इज ग्रेट। जीतना या नहीं जो नॉलेज नो दैट इज नहीं। और माशाल्लाह से सबने आंसर किया। माशाल्लाह से सारे क्वेश्चंस का आंसर किया। बहुत खुशी की बात है माशाल्लाह। बहुत अच्छा। एवरीवन इज विनर। एवरीवन इज विनर। बिल्कुल सही बात विद्या टीचर। मेरी तरफ से तो दोनों ग्रुप विनर है क्योंकि दोनों ने आंसर किया है। ओके जी अब किसका है मैम? Any other over program? to committee chair for the next program. No size. So English quiz winners are on first position Juwairiya Sadat of class 8. Thank you ma'am. Very good. And the second runner up is Husna of class 8. First is Juwairiya Sadat and second is Husna ma'am. Mashallah, you both prepared well. All of you prepared well. But the way you people are answering, the excellent, what I found. Excellent answers from both of you. Thank you, ma'am. Congratulations to both Juwairiya and Husna. So they are the 2 winners of your quiz. Yes. And Thank you. we are waiting for your results. You are our inspiration. Thank you so much for giving this responsibility to me, Sami teacher. Dear students, it was really very good that you have taken time and now you have understood how this is, because it was the first competition I think you have. Last time also we had. Definitely there is an improvement, but I want you all to understand technology more better so that we can have smooth competitions in future. Don't hesitate to take part into it. And you all will be having regional science fair on in February, and I think 8th January is the last day to submit your project. Take part into it. Even that is going to be virtual. Before that, we'll have many such mock presentations for you all, which you have to give it virtually online, and see that when make certain rules that you have to keep your cameras on. And I'm very glad that our students are not doing that. Nobody is scribbling on the screens, isn't it, during the classes, or anybody is troubling the teachers? No, ma'am. Nobody is doing. So I'm very happy that most of you have become very sincere, taking classes on time. Make sure that 80% attendance is very much required. And your friends who are not able to join, please talk to them and find out and do let us know. Tell them to come up to us so that we can help us how we can make sure that even they should not miss the education. Because there was a recent research that was done. The students who have missed their classes, are not connected with the education these days, have completely forgotten the basics, and it's becoming very difficult for them to cope up with it. So like, if this 1 year and with the change
in the technology and the methods of teaching, if the students are not catching up, it will be like they are back by 20-25 years. It will become very difficult for them to pick it up. So I would like to clap for all the students who have picked up so nicely, and you are able to join the classes and take it. But I would like to take 1 or 2 questions from the students who are facing any problem during the online classes. If so, please do let me know so that we can help you out. Anyone of you are facing problems during your online classes? Yes, Juberia and Hafsa. बोलिए आप लोग. Ma'am, actually we are shifting. That's why we cannot attend the classes. Because of shifting. Otherwise, during the classes, you don't have any problems. No, you are able to understand what the teachers are explaining and all. Do you have any difficulty in that? No. Don't have. Any other students? Where are you shifting? You were in Salarjung Colony, right? We were living in Aurangabad, so our furniture and all other things, we were just getting that things from there to here. Okay. But the advantage of online education is that if you are in Aurangabad or in Salarjung Colony, you will be able to join. Please make sure that you are not missing your classes. Supposing it has been a physical school where you have to go to school regularly, then when you are in Salarjung Colony, then only you can come to school. Now you go to any part of the world, you can join your Zoom classes. So please make sure that you don't miss. Okay? And others, anything else? Anybody else? Yes, Mustafa Ali, 8th class Mustafa not joining. Mustafa Ali, yes, Mustafa. Husna, I have seen good improvement in Husna. Very good, Husna. Keep it up. I think you are able to get good conceptual understanding during online classes, isn't it? And regular also, ma'am. She's regular also. Very regular and punctual, ma'am, as well. Punctual and regular. Ali, I have seen very good improvement in some of the students who are regularly attending the classes. Yes. Anybody has to, or parents, do we have any parents here? If they have to discuss anything or tell us about it, please. Ma'am, why social teaching classes? All the very best. So take care. Follow SMS rule. New Year has come, but Corona is still with us. So SMS rule, I tell you, use your sanitizers, mask, and social distancing is very much required. Whenever your teachers are also calling you for the classes, they are calling you in the different durations and times, so that all this is maintained. Take care of your health. Again, we are finding and coming to know about so many cases in the hospitals. So please take care of your health. Don't miss your physical exercises. Eat properly, build up your immunity, and see you all the very best.